Hello students, let's do some more questions on linear equations. This question is from board question paper in 2020. It can take 12 hours to fill a swimming pool using two pipes. आप दो पाइप यूज करते हो और एक स्विमिंग पूल को फिल करने में आपको 12 आवर्स लगते हैं. इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स. दो अलग अलग तरह के पाइप हैं. डायमीटर ऑफ वन इज लार्जर एंड द अदर इज स्मॉलर. If you use pipe with larger diameter for 4 hours and the pipe with smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? अगर हम अलग अलग खोले तो हर पाइप से कितना टाइम लगेगा पूल को सेपरेटली फिल करने में. हमको क्या फाइंड करना है बच्चे? कितना टाइम लगेगा. लेट टाइम टेकन to fill pool by pipe of larger diameter is x hours, and the time taken to fill pool by the pipe of smaller diameter y hours. सपोज आप एक काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट बना रहे हो. आप उस प्रोजेक्ट को 10 आवर्स में फिनिश करते हो. आपको लगता है कि मैं 10 आवर कॉन्टिन्यूअसली काम करूं और प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड. हाउ मच वर्क हैव यू डन इन 1 आवर? आप उस प्रोजेक्ट के काम को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे कि मैं 10 आवर्स में खत्म कर लूंगा. एक आवर में कितना काम करोगे आप? 1/10. 2 आवर्स में 1/10 प्लस 1/10 2/10. इन 3 आवर्स 3/10. 4 में 4/10 और 10 आवर्स में 10/10 दैट इज 1. एज्यूम करते हैं कि मेरा एक काम था 10 आवर्स में फिनिश हो गया. अब पाइप विद लार्जर डायमीटर x आवर्स लगाता है उसको फिल करने में, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/x इन 1 आवर. पाइप आई एम राइटिंग लार्जर पाइप. लार्जर पाइप will fill 1/x of a tank. 1/x अपने काम का वो कर लेगा. और इन 1 hour स्मॉलर पाइप will fill अपने टाइम का 1/y काम उसका फिनिश हो जाएगा. 12 आवर्स लगते हैं अगर वो दोनों पाइप एक साथ चलाते हैं. हमने एक पाइप को, बड़े वाले पाइप को 1 घंटा चलाया. कितना काम हो गया उसका? 1/x. दूसरे को भी 1 घंटा चलाया, उसने कितना काम कर लिया? 1/y. टोटल उसको फिल होने में 12 घंटे लगते थे. 12 घंटे में पूरा पूल फिल हो जाता है, तो 1 घंटे में पूल कितना फिल होगा? 1/12. ये मेरे पास इक्वेशन 1 है. क्लियर? ये था मेरे पास केस 1. केस 2. 4 आवर्स हमने लार्जर पाइप खोला और 9 आवर्स हमने स्मॉलर पाइप खोला, तो सिर्फ हाफ पूल फिल हुआ. 1 घंटे में जो लार्जर पाइप है वो 1/x काम करता है, तो 4 आवर्स में 4/x प्लस जो स्मॉलर पाइप है 1 घंटे में 1/y वर्क करता है, तो 9 आवर्स में कितना करेगा? 9/y इक्वल्स टू पूल कितना फिल हुआ? हाफ फिल हुआ. मुझे नहीं पता उसके कितने पार्ट्स करना है, लेकिन हाफ पार्ट क्या है? 1/2. टोटल एक काम था पूरा एक पूल फिल करना, उसका 1/2 हो गया इक्वल्स टू 1/2. टेक इट एज इक्वेशन. अब x एंड y आर इन डिनोमिनेटर. क्या करें? पुट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y एज b. Our equations are 1/x a, 1/y b. a plus b equals to 1/12. 12 on the left hand side. 12a plus 12b equals to 1. Take it as equation 3. Next 4/x plus 9/y. 4a plus 9b equals to 1/2. 2 on the left hand side. 8a plus 18b
equals to 1. This is equation 4. Now we have to solve these equations to find the value of a and b. After that we will find the value of x and y. Now coefficient of a is 12 and here coefficient of a is 8. What is the LCM of 12 and 8? It is 24. We need the coefficient of a as 24. Here also 24. We will multiply equation 3 with 2 to get 24a and equation 4 with 3 to get 24a, so that we can eliminate a to get the value of b. Now multiply equation 3 with 2 and 4 with 3. What do we get? 2 into 12, 24a. We will multiply the whole equation with 2 plus 24b equals to 2. Equation 4 with 3. 3 8s are 24a plus 18 3s are 54b equals to 3. Now we will subtract these equations. बच्चे pause the video and note it down. We have 24a plus 24b equals to 2 and 24a plus 54b equals to 3. We are subtracting these equations. Sign changed. 24a cancelled. Plus 24a minus 54b. We will get minus 30b equals to minus 1. Minus and minus get cancelled. b is 1 by 30. Put the value of b in, say equation 3. Put b in equation 3. Equation 3 was 12a plus 12b equals to 1. 12a plus 12 into 1 by 30 equals to 1. 12a equals to 1 minus 12 by 30. 12a equals to 30 minus 12, 18 by 30, and a is 18 by 30 into 12. 6 2s are 12, 6 3s are 3 10s are. The value of a is 1 by 20. But we have to find the value of x and y. What was a? 1 upon x was the value of a. The value of a is 1 by 20 equals to 1 by x. Cross multiply. The value of x is 20. b is 1 upon y. 1 by 30 equals to 1 upon y, and the value of y is 30. What was x and y? X was the time taken by larger pipe to fill the pool separately, 20 hours. The time taken by pipe with smaller diameter to fill the swimming pool was 30 hours. X equals to 20 and y equals to 30. It is our answer. A railway half ticket cost half the full fare. रेलवे में जो हाफ टिकट है उसकी कॉस्ट जो पूरा फुल फेयर जो पूरी एक टिकट है उसका हाफ है, बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट. बट अगर आपकी टिकट रिजर्व है तो आपने हाफ टिकट लिया या फुल टिकट लिया, रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम. वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 2350 रुपीज कॉस्ट लगी अगर किसी ने एक फुल टिकट रिजर्वेशन में कराया. And the one reserved, one first class ticket and one half ticket, both reserved from same station A to B, and it cost him 3,810 rupees. We have to find the full first class fare and reservation charges for the ticket. Let reservation charges be rupees X and full
rupees y for one ticket. Clear? And these are also reservation charges for one ticket. Now, in case 1, a person has reserved first class ticket from station A to B. He has to give X rupees for reservation charges and Y rupees for the fare from station A to B. So X rupees for reservation, Y rupees for fare, and the total he has to pay 2,350 rupees. This is our equation 1. Now, case 2. Another person has bought 2 tickets. One first class ticket and one reserved half ticket. First class ticket was also reserved. He has reserved 2 tickets, out of which one is full ticket and other is half ticket. 2 reserved tickets. 2 reserved tickets means reservation for one ticket is X rupees. Reservation for 2 tickets is X plus X, 2X. Reservation charges and fare for 1 plus 1 by 2. He has taken one full ticket and one half ticket. Reservation charges for 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2 tickets will be y into 3 by 2, that is 3 by 2y. And total he has to pay 3,810 rupees. So our equation will be 2x plus 3 by 2y equals to 3810. So let's simplify the equation. Taking 2 as LCM, we have 4x plus 3y equals to 3,810. 2 on the right hand side. 4x plus 3y equals to 7,620. Take this as equation 2. Now we will simplify the equations to get the value of x and y. The coefficient of x here is 4. Here is 1. We will multiply the equation 1 with 4 and subtract both the equations. Multiply equation 1 with 4 and subtract the equations. Multiply equation 1 with 4, you will get 4x plus 4y equals to 9,400. 4x plus 3y equals to 7620. Sign change. Y minus 3y, y equals to 1,780 rupees. This is the value of y. Now put the value of y in net equation 1. Equation 1 is x plus y equals to 2,350 and x is 2350 minus y, which is 1780. What will we get? 570 rupees. So the reservation charges for each ticket are 570 rupees and the fare for a full ticket is 1,780 rupees. This is our answer. A says to B, if you give me one of your stamps, we shall have equal number of stamps. A ने B को बोला, दो बच्चे हैं A and B. A ने B को बोला कि अगर आप मुझे अपनी एक स्टैम्प दे दोगे तो हम दोनों के पास सेम स्टैम्प्स हो जाएंगे. B says to A, if you give me your stamp. B ने कहा कि तुम मुझे एक दे दो. I shall have twice as many as you will be left with. आपके पास जितनी बचेंगी उससे डबल हो जाएंगी मेरे पास. How many stamps do each one have? Let number of stamps A has X has A number of stamps and number of stamps B has 1. Now, case 1. In case 1, A ने B को कहा, you give me one of your stamp.
ए ने ये ए की स्टैम्प्स थी, ये बी की स्टैम्प्स थी। ए ने बोला बी को कि तुम मुझे अपनी एक स्टैम्प दे दो। तो अगर ये बी जो है वो अपनी स्टैम्प दे देता तो इसके पास कितनी रह जाएगी, y-1, और इसने अपनी स्टैम्प इसको दे दी, इसके पास कितनी हो गई, पहले x थी अब x+1 हो गई। तो उसने बोला हम दोनों की स्टैम्प्स इक्वल हो जाएंगी। अब जो b था उसके पास y-1 रह गई, जो a था उसके पास x+1 हो गई, दोनों की स्टैम्प्स इक्वल हो गई। केस 1 है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस वन ऑन द राइट हैंड साइड -1 -1 -2। ये एक इक्वेशन आ गई। केस 2। केस 2 में बी ने क्या बोला कि तुम मुझे एक स्टैम्प दे दो। ये ए की स्टैम्प्स हैं, ये बी की स्टैम्प्स हैं। बी ने बोला कि तुम एक स्टैम्प दे दो। अगर ये अपनी एक स्टैम्प दे देता है, इसके पास कितनी रह गई, x-1, एंड बी विल हैव y+1। B says to A, आप मुझे अपनी एक दे दो, I shall have twice as many as you। अब B ने बोला मेरे पास जो स्टैम्प्स हैं वो तुम्हारी स्टैम्प्स का कितना है, 2 टाइम्स है। The stamps of B are twice of, 2 times of stamps of A। ये A की स्टैम्प्स थी, उसको एक देने के बाद तो B ने बोला जब तुमने मुझे एक दे दी उसकी y+1 हो गई, तो B की स्टैम्प्स कितनी थी, ट्वाइस ऑफ A की जो लेफ्ट ओवर स्टैम्प्स थी। क्लियर? सिंप्लीफाई करो, 2x - 2 equals to y+1, y on the left hand side and -2 on the right hand side, we have 2x minus y equals to 3। This is our equation 2, this is equation 1। Only we have to solve these equations। Coefficient of y is same but both signs minus। What we will do, we will subtract the equations, subtract equation 1 and 2। Equation 1 is x minus y equals to -2 and 2x minus y equals to 3। Sign change, x positive minus 2x negative, minus x equals to -5, minus minus get cancelled, value of x is 5। Put the value of x, put x in equation 1। Equation 1 is x minus y equals to -2, value of x is 5, minus y equals to -2 and 5 plus 2 is y, that is the value of y is 7। Now the number of stamps A has 5 and the B has 7 stamps। Let's check our answer। केस 1, A ने बोला B को मुझे एक स्टैम्प दे दो। A के पास कितनी हो गई, 5 + 1 6, इसके पास कितनी रह गई, 6, इक्वल स्टैम्प्स हैं। केस 2, B ने बोला कि तुम मुझे अपनी एक दे दो। A को बोला, A ने अपनी एक दे दी, A के पास कितनी रह गई, 4, B के पास कितनी है, 8, तो B के पास कितनी है, A का डबल है। क्लियर? A fraction becomes 1/2 when 1 is added to numerator, and it becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator and 2 is added to denominator। Find the fraction। This is first part of the question। For fraction we need numerator and denominator। Let numerator is x and our denominator is y, so fraction will be x upon y, numerator upon denominator। Case 1, case 1 is fraction becomes 1/2 when 1 is added to numerator। This is fraction, we have added 1 to numerator and the fraction became 1/2। And in case 2, fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator and 2 is added to denominator, the fraction becomes 1/3। Simplify them, this is 2 into x plus 1 equals to y, 2x plus 2 equals to y and 2x minus y is equals to -2। This is equation 1। Cross multiply, 3 into
x minus 1 equals to y plus 2. 3x minus 3 equals to y plus 2. And 3x minus y equals to 5. This is equation 2. In both the equations, the coefficient of y are same. Let's subtract the equations. Subtract equation 1 and 2. Equation 1 is 2x minus y equals to minus 2 and 3x minus y equals to 5. Sign change. 2x minus 3x minus x equals to minus 7 and the value of x is 7. Put the value of x in, say equation 1. Equation 1 is 2x plus 2 equals to y. Equation 1 is 2x minus y equals to minus 2. 2 into 7 plus 2 equals to y. 14 plus 2 y is equals to 16. So our fraction will be 7 by 16 x upon y. Now part 2. Also find the number obtained when 5 is added to numerator and 4 is subtracted from denominator. This is our fraction. We have 5 added to numerator and subtracted 4 from the denominator. What do we get? 7 plus 5, 12 upon 16 minus 4, 12, 12 upon 12 both cancelled. Our answer is 1. Students of class 10 assembled for a meeting were made to stand in rows. If 4 students are less in a row, there would have been 3 more rows. अगर हर रो में 4 बच्चे हम कम खड़े करते हैं तो नंबर ऑफ रोज विल बी 3 मोर. एंड इफ 8 स्टूडेंट्स आर मोर इन अ रो, हर रो में 8 बच्चे एक्स्ट्रा खड़े करते, देयर वुड बी 3 लेस रोज. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं? लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स रोज में सारे स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया. एंड लेट number of students in each row. हर रो में 22 स्टूडेंट्स हैं. लेट आपकी क्लास में 4 रोज है जिसमें बच्चे बैठे हैं. हर रो में 10 स्टूडेंट है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? 10 into 4, 40 स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ रोज है लेट x and students in each row are y. So how many students will be there? Total students will be x into y, that is xy. Now case 1, they are saying कि अगर 4 students are less in a row, हर रो में 4 students कम हो जाए तो रोज जो है 3 ज्यादा होंगी. रोज will be 3 more. If 4 students less in each row, हर रो में हम पहले y student रख रहे थे, अब 4 students अगर हम लेस रखते हैं, these are number of students in each row and the number of rows will increase. These are rows and these are students in each row. इन दोनों को multiply number of students in each row into row equals to total number of students xy. Multiply x into y, xy minus 4x plus 3y minus 12 equals to xy. xy and xy get cancelled. We have minus 4x plus 3y equals to 12. Take it as equation 1. Case 2. If 8 students are more in each row, earlier there were y students in each row, now there are 8 more students in each row. The number of rows would be 3 less. Earlier we had x rows, now the rows will be x minus 3. The number of students are still the same in the class, xy. We have x into y, xy plus 8x minus 3y minus 24 equals to xy. Xy and xy get cancelled. We have 8x minus 3y equals to 24. Let this is equation 2.
Now बच्चे, coefficient of y 3y, here coefficient is -3. Let's add these two equations. Add equation 1 and 2. Equation 1 is -4x plus 3y equals to 12 and 8x minus 3y equals to 24. Since we are adding the equations, so no need to change the sign. Minus 4x plus 8x, 4x equals to 36 and x equals to 9. Put the value of x in equation, say 1, that was 4x plus 3y equals to 12, minus 4 into 9 plus 3y equals to 12, 3y equals to 12 plus 36, 9 4s are 36, 3y equals to 48 and y equals to 16. Now the number of rows in the class are 9 and the number of students in each row is 16. What we have to find? We have to find the number of students in the class. बच्चे pause the video and note it down. Total number of students in the class will be x into y, that is total students. We have 9 rows and in each row number of students is 16. 16 into 9, 144 students are there in the class. Let's check our answer. Case 1. If the number of rows increased by 3, the number of rows will be 9 plus 3, 12 into. The student in each row is 4 less. Here we have 16. 4 less means 12. 12 into 12, 144 students. Case 2. If 8 students in more in each row, number of students in each row, 16 plus 8, 24. We have 3 rows less. 24 into 6, 144.